Everybody. So in this session, I'm going to tell type of NAT in checkpoint. तो in checkpoint firewall में कितने टाइप के NAT होते हैं, so वो चीज मैं आज बताऊंगा. So I'm going to keep this session in both language, Hindi and English, so that you can uh, understand accordingly. Okay. So in checkpoint NAT का टू टाइप होते हैं, ऑटोमेटिक NAT एंड मैनुअल NAT. ऑटोमेटिक नेट में भी टू टाइप होते हैं, हाइड नेट एंड स्टैटिक नेट. मैनुअल नेट में भी टू टाइप होते हैं, हाइड नेट एंड स्टैटिक नेट. ओके. So automatic net indicate that it is going to create automatically. Manual net indicate that we need to create manually. And in the production, in 90% of case, we only use manual net, because if you're adding manual net, so we can modify, we can delete, we can use as per our requirement. But automatic net has not that features. We can't delete, we can't disable, we can't modify as per our requirement. But just for the awareness purpose, we should aware what is the actual and major difference between automatic net and manual net. Okay. So automatic net, for example, if you're creating any object for the network or for the host or for the address, and inside that object, for example, in this diagram, let me just, yeah. So for example, here we created one LAN subnet. This is the object. And inside that object, there is option called NAT. And if you're using the type like hide, so this is called automatic hide NAT. Okay. So we are creating object for the network, and inside we just using the NAT. So that is called automatic hide NAT. Okay. For example, you're creating any host, and inside the host, if you're going the NAT section and you are using a static, so this is called automatic static NAT. Okay, so I hope you understand. So in automatic NAT, there are two types, hide NAT and static NAT. Okay, so if you are creating any object like network object, host object, address object, and inside the object, if you are using the NAT and you are using two types like hide or static, so that is called automatic hide NAT and automatic static NAT. Let's see through example also. So for example, come here, and if you go here, and I'm just creating one host. And just put 10 in, for example, this is our LAN PC. And LAN PC IP is, for example, 10.1.1.10. Okay. And inside this object, I'm going to use NAT and I'm going to type as a hide. So if you just click OK, it will call automatic hide NAT. So it's showing multiple object is already created for 10.1.10. So I'm just going to use anyway, because this is the lab environment. Okay, so this is added here. Okay, but in the production we don't use automatic NAT, and it is also not recommended. Manual NAT is used, and it is on top of, if you consider for the priority, so it generally on the top, manual NAT. So manual NAT rule need to be explicitly created in the NAT policy rule base. So manual NAT indicate that हमें खुद से create करना है manually. हमें ओरिजिनल सोर्स का जो ऑब्जेक्ट है खुद बनाना है, ओरिजिनल डेस्टिनेशन का ऑब्जेक्ट खुद बनाना है, सर्विसेज खुद बनाने हैं. आप सर्विस में क्या यूज कर रहे हो, HTTPS जो भी आप यूज करना चाहते हैं, आपको सर्विस खुद से क्रिएट करना पड़ेगा. देन ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन और ट्रांसलेटेड सोर्स जो भी है उसका ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट करना पड़ेगा. एंड देन वी नीड टू कम हियर, एंड इफ यू ऐड हियर लाइक ऐड रूल ऑन टॉप. सो फॉर एग्जांपल ओरिजिनल सोर्स में मान लीजिए आपने ये ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया लाइन पीसी. हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया लाइन पीसी के लिए, होस्ट के लिए, उसको ओरिजिनल सोर्स में ले लिया. ओरिजिनल डेस्टिनेशन मान लीजिए मैंने बोला कि भाई इंटरनेट है. ठीक है. उसके बाद में ट्रांसलेटेड सोर्स, आप चाहते हो कि जब ये हमारा पीसी इंटरनेट पर जाए, मतलब इंटरनेट से कम्युनिकेट करे, सो फायरवॉल का कौन सा आईपी से ट्रांसलेट हो. इन शॉर्ट मगर मैं बताऊं तो ओरिजिनल सोर्स हमारा पीसी है, ये इसको इंटरनेट से बात करना है, मतलब ओरिजिनल डेस्टिनेशन इंटरनेट है.
अगर हमारे पैकेट मैच करता है, सो हम बोल रहे हैं कि तुम भाई ट्रांसलेट हो जाओ इग्रेस इंटरफेस का आईपी से। तो जब ये बाहर जाएगा फायरवॉल से, तो सोर्स ये रहेगा और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल गूगल डीएनएस 8.8.8। सो this is how manual net work. So we need to create object manually, and then we need to add the NAT manually, so it will come on the top. Okay, we can change the NAT method. So in manual also there are two types, hide and static. So at the moment it is a static. A static is basically one-to-one mapping, we can say. Okay, so we need to create your object original source manually, then translate a source object manually, and then we need to go on the NAT section and then add. So it will come under manual NAT. In manual NAT there are two types, hide NAT and static NAT. Okay, so we can change the type from here. Right click and we can change the method, NAT method, hide or static. So at the moment it is static, we can change hide also. So basically static is one-to-one mapping. So hide हम किस केस में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 पीसी है, इंटरनल पीसी, एंड उसको अगर इंटरनेट पे भेजना है टू कम्युनिकेट समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, हम चाहते हैं कि जो बाहर जाए तो हमारा फायरवॉल की इग्रेस इंटरफेस से वो ट्रांसलेट होकर जाए। इस केस में हम यू कैन यूज हाइड, मैनुअल हाइड नेट। इफ वांट स्टैटिक नेट you can use, if you want to like one-to-one mapping, then we can use manual static net. So major difference between automatic net and manual net is ऑटोमेटिक नेट में क्या होता है कि रूल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय फायरवॉल। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर नेट सेक्शन में जाना है, और उसके बाद में जैसे आप हाइड या स्टैटिक यूज करोगे, ऑटोमेटिकली इट गोइंग टू क्रिएट। मैनुअल में हमें मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है, वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट मैनुअली देन ऐड द नेट, कैन नॉट बी मॉडिफाई। अगर हम आते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक नेट में, अगर आप यहाँ देखोगे, अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखो कोई भी ऑप्शन, वी आर नॉट एबल टू सी डिलीट, डिलीट इज आल्सो ग्रे आउट एंड डिसेबल आल्सो, सो वी कांट डिलीट एंड डिसेबल, वी कांट मच मॉडिफाई हियर। दैट इज द रीजन इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज द प्रोडक्शन। कोड फॉरवर्डिंग नॉट पॉसिबल, लेकिन मैनुअल नेट में हमारा पॉसिबल है। आप चाहते हो कि ओरिजिनल सोर्स जो है अगर बाहर जाए तो ट्रांसलेट हो जाए, सर्विसेज जो ओरिजिनल है एचटीटीपी बाहर जाए तो ट्रांसलेट हो जाए सर्विसेज एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। सो सच टाइप्स ऑफ चेंजेस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ मैनुअल नेट। प्रॉक्सी आर्स इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। अगर आप मैनुअल नेट क्रिएट करते हो तो प्रॉक्सी आर्स हैज टू बी क्रिएटेड मैनुअली, वो हम आगे सेशन में देखेंगे विथ एग्जांपल लाइव के साथ। दिस इज द फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे, दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते हैं, बट ऐसे टर्म में यूज किया हुआ है, दिस इज नॉट मच कॉम्प्लेक्स। ओके, आई टी ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज मैनुअल नेट इन द प्रोडक्शन। ठीक है, मैनुअल नेट में हमने हाइट देख लिया। अगर आपको हमारे पास मान लीजिए ये 3 पीसी है, अगर इफ यू वांट टू गो ऑन द इंटरनेट, अगर इसको इंटरनेट पे जाना है, यू वांट टू ट्रांसलेट विथ दिस फायरवॉल इग्रेस इंटरफेस आईपी। सो अगर इसको आप ट्रांसलेट होकर के और अब ये बात करेगा इंटरनेट से, फॉर एग्जांपल गूगल डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस। So only what this firewall do, it's going to use the port, different port. For example, 123. For this IP, it is going to use same IP but port 124. So अगर ये रिप्लाई करेगा तो इस IP को करेगा, so it is going to recognize with the help of port, and then it will send back to the this host. So this is how manual hide network. यहाँ पर एग्जांपल से देखते हैं। तो मान लीजिए हमारी इंटरनल पीसी है, अगर ये बाहर इंटरनेट पे जा रहा है तो इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट विथ आवर इग्रेस इंटरफेस आईपी एड्रेस एंड अलग पोर्ट ले लेगा। ओके, अगर उधर से रिप्लाई आएगा, सो किसको आएगा रिप्लाई, इंटरनेट से रिप्लाई आएगा हमारे फायरवॉल इग्रेस इंटरफेस आईपी को 1.1.1 को, और ये भेज देगा किसको, अपना होस्ट को जो कि इनसाइड है। So it is going to recognize with the help of port. So depends upon the organization need, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो कहाँ पे जरूरत है, बट मोस्टली यूज मैनुअल हाइड नेट एंड स्टैटिक नेट इन द प्रोडक्शन। स्टैटिक नेट बेसिकली वन-टू-वन मैपिंग, ये इससे कम्युनिकेट होगा, ये इससे कम्युनिकेट होगा। तो जब ये बाहर जाएगा ट्रैफिक, इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इन दिस, ये जाएगा तो इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इन दिस, ये बाहर जाएगा तो इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट दिस। ये जाकर के जिससे भी बात करना हो, फॉर एग्जाम्पल गूगल डीएनएस से बात करना है यहाँ पर,
इससे बात करेगा, ये ट्रैफिक इसको सेंड करेगा और वापस रिटर्न इसको, और ये भेजेगा इसको। सो दिस इज कॉल्ड वन टू वन मैपिंग। एंड ये हम इसको बोलते हैं मैनुअल नेट स्टैटिक, मैनुअल नेट में स्टैटिक टाइप, स्टैटिक नेट। इसका कैसे सीन है? ठीक है, एन एक्सटर्नल कंप्यूटर इन द इंटरनेट सेंड अ पैकेट टू इतना, एंड द फायरवॉल ट्रांसलेट द आईपी एड्रेस टू इतना। ठीक है, मतलब इंटरनेट सेंड पैकेट टू दिसना, मतलब इंटरनेट से पैकेट किसको आएगा? 1.1 को। मतलब हमारे हमने एक पूल क्रिएट किया है जिसमें एक 1.1, 1.2, 1.3 रखा है। ठीक है, तो हमने स्टैटिक नेट रखा है, वन टू वन मैपिंग किया है। तो अगर इंटरनेट से कोई ट्रैफिक इसको हिट करता है 1.1 को, फायरवॉल ट्रांसलेट कर देगा इसको 192.168.1.1 को। ये कौन क्या है? हमारा इंटरनल कंप्यूटर है जो कि रिसीव कर लेगा पैकेट। ठीक है, फिर हमारा जब इंटरनल कंप्यूटर क्या करेगा, जब रिस्पॉन्ड मतलब रिप्लाई करेगा, तो फायरवॉल इज गोइंग टू ट्रांसलेट एंड यूज करेगा सोर्स में 1.1.1। ठीक है, फायरवॉल ट्रांसलेट दिस एड्रेस टू 1.1.1 एंड इंटरनल रिसीव पैकेट फ्रॉम 1.1.1। सो इसको आप कंसिडर कर लो कि मान लो ये इंटरनेट पर है। ठीक है, सो अगर इंटरनेट से फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं, लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड। ये हमारा 1.1.1.1 आईपी है, हमने पूल में रखा है स्टैटिक मैपिंग के लिए। तो अगर इंटरनेट से इसको कोई हिट करता है, इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट विद दिस आईपी। ठीक है, अगर यहां से फायरवॉल को, मतलब ये इंटरनल साइट के जो पीसी है, ये अगर फायरवॉल को रिप्लाई करता है, मतलब तो फायरवॉल इज गोइंग टू use this IP as a source and then it will send to the destination। ऐसे समझो इन शॉर्ट। ओके, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ नेट इन चेक पॉइंट। अगर आप यहाँ आते हो, देखते हो, फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं। सो हमने क्रिएट किया, ओरिजिनल सोर्स क्या है? हमारा पीसी है, लाइन पीसी। अगर ये इंटरनेट पर कम्युनिकेट हो, तो मैं हमने बोला कि भाई उसको ट्रांसलेट कर दो फायरवॉल के इग्रेस इंटरफेस से। आप चाहते हो कि इसको कीप एज स्टैटिक, नेट मेटा स्टैटिक। सो हमें प्रॉक्सी क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए। सो विल सी दैट पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। सो इट इज वन टू वन मैपिंग वी कैन से। फायरवॉल इसको ट्रांसलेट करेगा और बाहर डेस्टिनेशन से बात करेगा, फिर डेस्टिनेशन इसको रिप्लाई करेगा, फिर फायरवॉल इज गोइंग टू ट्रांसलेट एंड सेंड बैक टू दिस पीसी, इंटरनल पीसी। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ नेट इन चेक पॉइंट। सो ऑटोमेटिक नेट एंड मैनुअल नेट दोनों में हाइड दो टाइप होते हैं, हाइड नेट एंड स्टैटिक नेट। मैनुअल नेट में भी टू टाइप्स, हाइड एंड स्टैटिक नेट। मोस्टली इन द प्रोडक्शन वी यूज दिस एज पर द रिक्वायरमेंट। आगे के सेशन में हम लैब के साथ देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड विल डू समथिंग बेटर इन अ कमिंग फ्यूचर।